Hello everyone, good afternoon. Please first switch on your cameras if possible for you. Very good. Good afternoon, dear. Good afternoon. Good afternoon, dear. What about others? Please switch on your cameras. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, dear. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, dear. Everyone, please be on mute, and if you unmute yourself, be remember to again mute yourself. Okay, good afternoon, everyone. So I hope you everyone had a good lunch. Is it? Yes, no, boring, normal day, excited day, something special, new learning, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं. किसी के यहाँ कुछ स्पेशल बनाओ. Something special occasion, birthday, anniversary, nothing. Chalo. Anyways, let's start with the introduction part. We have so many people who are new with Dharma Science. So, firstly, I would like to know the purpose of joining. Do you want to learn this for yourself, or if you have any business, so to grow your business, or if you are planning to start up your business? With that, how you come to know with Dharma Science and a little bit about you, what you guys are doing. So please raise your hand. I will be making you unmute. So we will start with the introduction pass first. Quickly, please. Okay, let's start with Shalini ji. Please unmute yourself. Hello, I'm Shalini from Bangalore. You're able to Okay. hear me? Yes. One of my friend, actually, I met her in another workshop, like in Instagram. Okay. By she knew, she gave you a number, and also she suggested that you can go for with basics, whatever the things she is going to teach you. Awesome. So that's Okay. how I got contact from yours. And Okay. basically, first I'm a teacher. I wanted to try out for myself. Then, if it works out, probably for friends. But otherwise, for family and myself, first to try on. In nothing you are you work commercially for any kind of products related to cosmetics. Are you No, no. working? No. No, actually, I'm a teacher. I'm a teacher in college, so I have time now because of lockdown. Mm-hmm. So I thought Mm-hmm. I'll learn for myself. Okay, good. Thank you. Okay, let's come to the Mamta ji. It will be great if you give the introduction part so I can help you after the session as well accordingly. Yes, Mamta ji. I am a naturopath doctor. Yes. So I had done your hair session Okay. and it was wonderful. So I thought I should learn something more new so that I can help people to make them more beautiful naturally. Okay. Do you prepare like any products? Not well. I make face packs Okay. with dry fruit and everything. Okay. But I just use kitchen products. Okay. You have a clinic where? In Surat. In Surat. Okay, great. Thank you. Let's start with Archana ji. You are on mute, dear. Please unmute Yeah. yourself. Hi, I'm I'm so Archana from sorry. Bangalore. Dear, you haven't raised your hand. I'm talking about the another one. Please raise your hand and then I'll let you know to unmute. Okay, I'm sorry. Yes, Archana ji. Hi, Hello. I'm working in VLCC Institute as a Okay. skin faculty. So Hmm. मैं बस अपने आप को पॉलिश करना चाह रही हूँ, अपग्रेड करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए सीखा और थोड़ा बहुत मैं अपने स्टूडेंट्स को भी नॉलेज दे सकते हैं इस बारे में बिकॉज हम लोग कॉस्मेटिक साइंस एंड कॉस्मेटिक रेसिपीज तो करते ही हैं. सो ये मुझे अच्छा लगा, अपीलिंग लगा, इसलिए मैं कर रही हूँ. Okay, good. You are from where? दिल्ली.
Okay. Do you have attended any session related to No. cosmetic making before? No. It's my Okay. first workshop. Okay. Thank you. Dr. Chetali. Hi. Good afternoon. Mhm. It's not doctor. It's actually a pharmacist. I've Okay. completed my MBA itself Mm-hmm. in pharmaceutical industry management, Okay. and for such as a side business, I'll like to start with the whipped cream, lotion, soaps, and everything. So I attended Okay. a workshop before Mm-hmm. regarding melt and pour soaps, and Okay. now I'm here for the lotions and cream. Okay. So you have started something to prepare in related to soaps? Yeah, I have started with the melt and pour. Yeah. Okay. Okay. Good. Yes, Dharmika ji. Hello, I'm Dharmika. I just finished my architecture and I'm here just because of my passion to learn about skincare. Okay. And yeah, I think I want to take it up as a future small business. Okay. You are not doing anything commercially right now? No, not right now. Okay. Thank you. Minachi ji. Good afternoon, all of you. Good noon, dear. Actually, I'm the manufacturer of cow dung herbal products. Actually, all of a sudden, the Facebook I saw your this advertisement that you are teaching lotion classes. Okay, I thought okay, I can give it. You just gave some instructions like that. We can come to know whatever all the products mixed along with it. We will have the knowledge what products we are using in the market. Like that, you gave the advertisement. It just attracted me. I thought, okay, why don't we join and just give it a try? So only I have joined today. Okay, very good. Thank you. Nice. Moreover, if I could learn very well, I can go for just manufacturing also. I'm just planning Okay. for a business. Okay, good. So, thank you. Thank you for the You're welcome, dear. Okay, Grishma ji. Hi, I'm Grishma from Kerala. I'm an advocate, and actually, I was starting to. Actually, I'm planning to start some cold process soap making. Then I asked some of my friends. They told me to just try these other cosmetics also, like this all lotions and moisturizers. And I hope to learn that one also. Okay. Are you started anything in the preparation? I just started, just manufactured those soaps, but it wasn't it wasn't started marketed yet. Okay. Fine. Thank you. Archana ji, the next one. Hi, this is Archana here. I hope I'm the Hello. only Archana after the first Archana. Yes, right. Okay. Yeah, so I'm from Bangalore, currently on a maternity break. So I thought, why don't I do something useful during this time? And thanks to lockdown also. Okay. So I've just started a small time business of soaps and intention candles that I make. Yeah, so just want to add on more products to the list and market them also. Okay, so you are doing with the candles right now. Yeah, candles and soaps. Okay, great. You are from? Bangalore. Okay, good. Thank you. Okay, Thank so like people don't like lockdown, but for us ladies, I think it's a great opportunity from last 1 year that we are growing at home with household work. So it's great for us people, I think. Okay, Faria ji. Hi, I'm from Bangalore and basically an IT profession. So like I'm very much obsessed with, like skin learning and, learning or from organic things. So it's for self actually, not for a business. Okay, do you have attended any other sessions related to cosmetics? No. Is it your first? Yes. Okay, fine. Someone is logged in with the name of Sia Pure Skin Love. I don't know the name. Yeah. Yeah, ma'am. It's Rimple Garg from Ludhiana. Hello, dear. Very good afternoon, ma'am. Good noon. Ma'am, basically, I'm into soap making now.
but I want to try my hands in creams and lotions. Okay. In soaps, I'm dealing with the brand name Sia. Okay. SIA. Okay. Is it a melt pour or cold process? Both kind of soaps I'm dealing with now. Okay, great. And about Dermacare, I have came to know from the Facebook now. Actually, I was scrolling and then I came to know about Dermacare. I thought that I should go for it. Okay. Thank you. You're welcome. Is I am audible to everyone clearly? Yes, ma'am. Okay, good. So, for the people who is attending these kind of session for the first time, it will be quite difficult to get familiar with the terms, but I will try to explain each and everything in detail. One more thing, I know so many of people are only comfortable with English and so many only comfortable with the Hindi, but while explaining, it's not possible for me to translate each and every sentence, but I'll try my best. If you guys in between face any problem, if you missed out something, if you have left any query, please write it in a chat box or please raise your hand. Please don't unmute it in between. It will be hassle for me as well. And I always say the recording I do share not for the people who are not able to attend this session. It's for you people as well. So it's necessary, it's compulsory to see the recording after the session as well, because in my sessions you will get like whenever you watch a recording you will get something new. Okay, and one more thing, please make your own notes. It's recommended. I will give you a PDF and notes, everything, but the method I do teach, it's not dependent upon the recipes and something like मैंने आपको एक पूरी रेसिपी लिख के दे दी और आप बस किचन में जाके वो बना लो. So I don't work like that. I will not give you मलाई पनीर रेसिपी. I want कि आपको तीखा मलाई पनीर चाहिए, आपको मीठा मलाई पनीर चाहिए, आपको ज़्यादा चीज़ी चाहिए, ज़्यादा मक्खन वाला चाहिए, क्यूब्स आपको कैसे चाहिए, सो आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सको. ओके, सो दैट इज़ माई मोटिव. आई विल गिव यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट्स रिक्वेस्टेड टू प्लीज रिसर्च more and more. And the second thing, please make your notes. And the third thing, please after the session make sure to listen the recording so that you will come up with the doubts and clear your doubts with the next day. Okay, so it's a 3-day session. I have divided this session. First part is the formulation, second is the ingredients overview, and third one will be the demonstration part, or the third day we will see the demonstration. For any recipe it is important to be a formulator, right? We do prepare dal makhni at home, right? But still when we go out for a lunch or for anything, for a party, so again we do order a whatever dal makhni. So why we are paying to them? It's because the formulation that we don't know. हम भी दाल मखनी बनाते हैं, बट जब हम बाहर जाते हैं तब भी हम दाल मखनी ऑर्डर करते हैं. Why we are paying to them? Because of taste, the formulation they are using. So basically we need to be a formulator. If your client says I want a 2, 3, 4 problems, so you must know how to customize the products. Okay, this is the main motive. So first and very important part is the formulation part. We will take up the queries and everything, but let's move on to the formulation part one. So slowly and slowly you will get to know everything. Okay, let's start with the session. Okay, so it's a 3-day session where we will learn to prepare our lotions, creams and body butters, as they all are interrelated. They all are interrelated to each other, and there are so many new people in their session, and I welcomes you on board with the family of a Derma Science. Now you become a family of a Derma Science. Let's see the first thing what we need to know about these three is the difference in between all three. हमें सबसे पहले जानने की क्या जरूरत है? The difference we do face with the texture, with the packaging, what they have in it. So we will discuss about the main difference of this so that you can clearly come up with your clients that उन्हें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, which
particular lotion, cream or body butter is mainly suitable for you, or any of the one or all three? What ingredients are basically important? So let's talk about the short difference in between all three. The first one is lotion. So please raise your hand whosoever wants to explain me related to a lotion texture, packaging, what do you think, what lotion have in it, and whatever, if you have any guesses. Anyone? Waiting, at least try. Yes, Sumatji. Ma'am, hi ma'am. Hello. Hello, yeah. Ma'am, the texture of the lotion is quite flowy. If you compare the lotions from cream is a little bit sticker form of, or we can recommend it for the dry skin. And the lotion we can recommend it for the oily kind of texture or combination kind of texture. थोड़ा सा उसका जो texture होता है वो थोड़ा सा slightly मोटा नहीं होता, थोड़ा मतलब सेम ही काइंड ऑफ होता है कि फ्लो भी हो जाए और थोड़ा सा वो भी हो जाए, और वो थोड़ा सा हार्ड होता है क्रीम का. ठीक है. यस चैताली. Ma'am, as such, as we differentiate between the creams and lotion, the cream is kind of suspension which is thick in nature, and the lotions are in a liquid flowing property which give ease for your to apply, as in for hand and whatever you apply it on. Okay, so the quick differentiate in all three, and then we will move to the slide. The first one, we have a lotion. Yes, lotion is having a very liquidy consistency. Cream is something which is more thicker than lotion, and body butter a total natural of fat. Okay, now with these statement, what we can say, the lotion must contains more water part as compared to cream. If I'll talk about the cream, so again, cream is a lesser amount of water as compared to lotion. Lotion have more quantity of water. If I'll talk about the cream, cream is having a less amount of water when I compare a cream with lotion. The third one is butter. Butter is something which is totally a fat and do not contains any amount of water. Okay, so please make your own notes. With this statement, one more thing I want you to clear it out. Lotion is for all skin type people. Is for all skin type people. Sensitive, combination, dry, oily. It's just how you are customizing your product. Clear? Second, creams. Again, cream is something which is for all skin type people. It is for sensitive, it's for combination, T-zone, oily, dry. For any problem, you can use it. Coming to the third one, body butters. Body butters are the one which don't have water in it. Only a total of fat. Fat means oil. So it means we can't use that to the people who is having a oily skin or having a T-zone or a combination skin. We only can give body butters to the people who is having a extreme dry skin. Extreme dry skin, why I'm saying for dry skin, we can recommend lotions and creams as well. For only for the extreme dryness people, we do recommend a body butters. Why not for the oily people? Because it's totally have a oil in it, and if we will provide to the oily skin people, again with more excess of oil, they will face a issue. So body butters we only provide to the dry skin people. Okay, lotions is used for the body, not for the face. Creams are used for the face, not for the body. The last one is the body butter. Body butter we can apply at any part of the body, but only with the case of extreme dryness. Clear?
Okay, again I'm repeating the three main difference in all three: lotions, creams और body butters. लोशन की कंसिस्टेंसी पतली होती है, इसका मतलब उसमें पानी ज्यादा होता है. अगर क्रीम की मैं बात करूं तो क्रीम लोशन से ज्यादा थिक होती है, गाढ़ी होती है. इसका मतलब लोशन से जब मैं कंपेयर करूंगी तब क्रीम का वाटर प्रपोर्शन लोशन से कम होगा. लोशन में ज्यादा होता है, क्रीम में कम होता है. बॉडी बटर की मैं बात करूं तो बॉडी बटर में पानी नहीं होता है. इट्स टोटली प्योर ऑफ फैट. वो प्योर बटर और ऑयल से बनता है. वो पूरा आपका पूरा फैट होता है. लोशंस आप किसी भी स्किन टाइप के लिए बना सकते हो, क्रीम्स आप किसी भी स्किन टाइप के लिए बना सकते हो, लेकिन बॉडी बटर सिर्फ आप ड्राई स्किन वाले लोगों को दोगे. क्यों? क्योंकि खुद बॉडी बटर में ऑयल ही ऑयल है और ऑयली स्किन वालों को दे दोगे तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. वो कुछ असर नहीं करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली इट विल गिव इट टू यू. द लास्ट, लोशंस हम बॉडी पे यूज करते हैं लगाने के लिए. इफ आई टॉक अबाउट द क्रीम्स, क्रीम्स को हम फेस पे यूज करते हैं लगाने के लिए. इन द लास्ट वन इज बॉडी बटर. बॉडी बटर हम बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीम ड्राइनेस के केस में. ड्राइनेस और एक्सट्रीम ड्राइनेस में एक बहुत थिन लाइन है, उसको जज करना आपको आना चाहिए. अगर मैं ड्राइनेस बोल रही हूँ, सो व्हाई यू आर टेकिंग अ बॉडी बटर इंस्टेड ऑफ क्रीम? आई हैव सेड दैट क्रीम इज यूज्ड फॉर द ऑल स्किन टाइप पीपल. तो अगर ड्राई स्किन है, गो फॉर क्रीम. Only body butters is to be recommended for extreme dryness. बिल्कुल cracked हो जाती है heels. Okay, in that case, we will recommend a body butters. We do face psoriasis kind of problem. Okay, वो बहुत extreme dryness की वजह से होते हैं. तो again, we will consider a body butter in that particular cases. Okay, so let's see the difference now. Differences between lotions, creams and body butters. Coming to the lotion part first, tend to have higher water content, less oil and body butter. It is having a higher water content. पानी इसमें ज्यादा होता है, ऑयल और बॉडी बटर कम होता है. Easier to apply. Why? Because of water. अब पानी ज्यादा होता है और पानी हमारी बॉडी में बहुत easily absorb हो जाता है और हम लोशंस को बॉडी के लिए यूज करते हैं. Easily absorbable in body. बॉडी में easily absorb हो जाता है. Lightweight and non-greasy. Why non-greasy? Because it is having a less of oil and body butter in it. And why lightweight? Because water is very light in weight and we are adding more of water into the formulation of lotions. Lastly, mainly available in tube forms. Don't judge the packaging. It's the main and the common packaging we do found in the markets. That is a tube form. तो tube form में हमें ज्यादातर मिलते हैं. नॉन ग्रीसी होता है क्योंकि इसमें ऑयल और बटर कम होता है, चिकनाहट कम होती है. और लाइट वेट इसलिए होता है क्योंकि हम पानी ज्यादा डालते हैं और पानी का वेट खुद बहुत लाइट होता है, हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. क्योंकि ऑयल को एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, वाटर को नहीं. इजियर टू अप्लाई, अगेन बहुत स्मूथली लग जाता है क्योंकि पतली होती है. कमिंग टू द क्रीम पार्ट, okay, higher in oil and body butter concentration. If I'll compare a cream with lotion, again it is less in water and high in oil and body butter concentration. Thick in consistency, गाढ़ा होता है. Designed heavier because it is having a more of oil and body butter into it. इसीलिए heavy होता है, हमारे स्किन में इजीली पेनिट्रेट नहीं होता है एज कंपेयर टू लोशन पार्ट. इसीलिए हम लोशंस को सिर्फ बॉडी पे यूज करते हैं, क्रीम्स को फेस पे. Good for winters. Why it is good for winters? Because it is having a more of oil and more of body butters, and we all know that in winters we do face a dryness problem. तो अगर मैं इसको पानी कम करके ऑयल और बॉडी बटर ज्यादा डाल रही हूँ, it means it will give us a मॉइस्चराइजेशन. जो फैट है, जो हमारी स्किन को फैट चाहिए ड्राइनेस को दूर करने के लिए, वो हमें ऑयल और बॉडी बटर से मिलती है. अवेलेबल इन प्लास्टिक एंड ग्लास जार्स. ओके, लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी butters. Higher in butter concentration, give intense moisturizer,
thick in consistency, available in plastic and glass jars. So higher in butter concentration, we don't add water into this. पानी हम नहीं डालते, सबसे ज्यादा इसमें बटर्स का ही यूज किया जाता है. इंटेंस मॉइस्चराइज कर देता है हमारी किसी भी बॉडी पार्ट को, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जहां पे हमें मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है, मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ होगी, सिर्फ ड्राई स्किन वाले पीपल के लिए. ऑयली स्किन मतलब ऑयल सिक्रेशन हो रहा है, उन्हें मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं है. थिक इन कंसिस्टेंसी गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलता, क्रीम जितना भी नहीं डलता है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ okay, now the difference in all three products is clear. You know when we need to use lotion, where we need to use lotion, where we need to use cream, and why. The main reason why, because lotion is higher in water, cream is higher in oil and body butter as compared to lotions, and body butter not have water in it, and it's totally a pure form of fat. That's why we are using it for a dry skin people or a problem which caused due to dry skin. Now coming to the second differentiate, that is very important. If you know this particular thing, then only you can convince your client why they should take a product from you. That is the difference in a market product and a homemade products or a natural products what we are making. So anyone who can explain me the difference in a market product and a homemade product, please raise your hand. Fast, quickly. Someone it's very difficult. I don't know, it's written in Chinese or what. Please unmute yourself and please let us know the difference. Mahera, yes. Ma'am, actually market the ones which the product we take from market are chemical based, and which we make homemade are we make with natural products. Shabina ji, please be on mute. Yes, please continue dear. मैम जो हम मार्केट से लेते हैं वो कई बार हार्मफुल भी होता है, हर एक को सूट नहीं होता है, एंड homemade is less in chemical and very natural process, so it is मतलब अच्छा इफेक्ट आता है. ठीक है. Okay, before going to anyone else, okay, let's complete this first. Yes, yeah. Ma'am, in homemade products, actually, it's our discretion to add according to the situation, according to the skin type, according to the skin condition, what we are basically targeting. But from the market, when we get the product, it is as a whole. Yeah, please give me a minute. Shabina ji, I'm muting you again and again. Please don't unmute yourself. It creates disturbance once you see the recording. Okay, ma'am. Yes, please, dear, continue. Basically, ma'am, what I was saying that in the homemade products, what is we can target each and every possible problem, like for pigmentation, for dryness, for anything, for sensitivity, for everything. But from the market, when we get the product, it is for as a whole. Only 3 or 4 ranges are available from the market. Secondly, the chemicals that are added. There is a long list in the ingredient list. We can see the long list of things, which is I don't think it's very much necessary. As a soap formulator, I think कि इतनी चीजें तो जरूरत ही नहीं होती हैं, आपको 2, 4, 6 चीजों से बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाता है. Very good. ठीक है. Next, Sumat ji, thank you, dear. First of all, the difference in preservatives, and the second difference is we can customize product according to client's need. But in market there are they only target one problem. This is for pigmentation, for whitening, and for anti-aging, and we can customize and wholesome according to the problem of the client. Okay. Yeah. Good enough. Archana ji. Only Archana.
Double H. Okay, fine, good enough. It's a good description and fair enough that what you all have said. But Shabina, is there any problem in your mic? Yes, ma'am. Again, you unmuted yourself. Is there any problem in your mic system? Please mute yourself, dear. मैम क्या करना है? म्यूट करना है. मैं आपको म्यूट कर रही हूँ बार बार. आपको वॉइस माइक को बंद करना है, बट आप बार बार माइक चालू कर रहे हो जिससे कि बाहर की आवाजें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही हैं. Okay. So fair enough. The good differentiate in between all the few things. While listening to you, I want to clear it. Yes, we can customize our products. The whole thing was good enough, but the one thing that they do use a chemicals as well. We are going to use a chemicals, but how it is different, we will let you know. And the second, someone said that, okay, I forgot. Let's see the major difference in things. Okay, differences between manufactured and natural handmade lotion, creams and body butters. So the first thing, market products manufactured in big batches and used by different companies with different names, brand names basically. It's totally on a brand name. If I'll say the Garnier is having an anti-aging cream, and again Olay is also having an anti-aging cream, the formulation, everything is same in both the creams because they are not preparing by themselves. They are giving a contract to a manufacturing companies to prepare an anti-aging cream, and they do make a cream in a large amount of bunch, and after that they do provide that cream into different companies like Garnier, Pond's, Olay, and so many different people. They have used same thing, same formulations they have given to different companies, and after that, because of the brand value, they have sold it out for different prices. So they do make in a very big patches, and they do sell with their brand names. What we are doing as well, the reselling, right? What we do, I am the one who is preparing my all-in-one cream, and you people are taking from me in a bulk rate 1 kg, 5 kg or whatever, and because of your clients, you maybe Archana ji keep it for a 150 for 100 gram, the Mahera ji will sell it for 200 rupees. So it's totally upon how people trust you, what's your brand value, what's your goodwill. But in our industry, what we are doing, we are not doing it in a very large amount, in a very big patches. So but in a marketplace, they do the things in a very large and a very big patches, and just because of the brand value, they do sell it in a different prices. The whole thing will be same there. The second difference, market products are mainly prepared by synthetic ingredients. Okay, so what is a synthetic ingredients? Synthetic means the chemicals which are prepared in laboratory by mixing up so many chemicals.
What we are doing, we are using a chemicals, but that is a natural chemicals. What are synthetic? Which is prepared in laboratory by mixing so many chemicals with that. But what we are doing, that is a natural chemical. How it prepares? Again, it is prepared in a laboratory only, but by mixing so many natural products and with their reactions. Okay, जब हम किसी नेचुरल चीजों को लेके मिला के उस पर रिएक्शन करके कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो अगेन इट इज अ केमिकल ओनली, क्योंकि हमने उस पर रिएक्शन तो किया है बट वो नेचर से हमें मिली है, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक क्या होता है, उनके पास बहुत सारे एसिड्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको आपस में मिला के वो जो रिएक्शन क्रिएट करते हैं, दैट इज अ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स, वी विल यूज अ केमिकल्स विच इज नेचुरली derived. Okay, again it is a chemical only, and both synthetic or natural ingredients, both are suitable for skin type, but till the certain percentage. Okay, but if you exceed that percentage, then only it will harm you. Even not a chemicals, that is synthetic chemicals, can harm you till certain percentage. It's just a myth that it is having a paraben, and just because of the marketing strategies and so many advertisement, we do stuck that it is having a paraben, so it is not good or whatever. But why people are making it, why it is approving by the government? Because till certain limit it is good to use, but again, because we are working a natural, so we will use a natural synthetics or a natural chemical into our formulation. But the important thing is to see the formulation, how much percentage is required to prepare anything. If you exceed that percentage, it will harm the skin or people body. Okay, so last difference is handmade or homemade products gives the individual right to the person to add the product as per their choice. This point is everyone is familiar with this, that we don't have we have a right to customize our products, but it's not in a market product. If we go out to buy like I am facing a problem of darkness, or I do have a dry skin as well, and I'm the person who is not able to apply two different creams, like firstly a sunscreen and then a moisturizer cream. It becomes a hassle for me, so I want a single cream which gives me a property of sunscreen as well, which solves my problem of dryness as well and works for my skin lightening as well. So if I'll go to the market to buy a single cream for all three problems, it is difficult that we will found. I need to take a sunscreen separately and a cream for dryness separately. But in the customization in our it's our right, and we can do that we can customize, we can put up all three ingredients into our cream or lotion formulation, so that our client will get all the results with a single cream. So पहला difference, market में जो क्रीम बनती है वो बिग पैच में बनती है, वो खुद नहीं बना रहे हैं। अगर वो खुद भी बना रहे हैं तो वो सेल आउट भी करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, कोई कंपनी बनाती है, कोई कंपनी नहीं बनाती, वो दूसरों लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। तो ओले, गार्नियर सब एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, एंटी एजिंग बोला है तो वो एंटी एजिंग क्रीम ही बनाएगा, बिग पैच में बनाएगा, बहुत बल्क रेट में बनाएगा, वो गार्नियर को भी बेच देगा, ओले को भी बेच देगा, पॉन्ड्स को भी बेच देगा, और सबको अलग अलग रेट में बेचेगा, ठीक है, जिसकी जैसे गुडविल है उसके हिसाब से उसको बेचेगा। और फिर वो हमें बेचते हैं, ओले बेच देगा हमें 300 रुपए की, गार्नियर हमें बेच देगा 200 रुपए की। फॉर्मुलेशन विल बी सेम, इट्स जस्ट अ myth that yes, we are seeing a lots of advertisement because of Ole, so we will good to go for a 300 rupees for a same cream. The second difference, synthetic ingredient और chemical ingredient, natural chemical, synthetic ingredient भी chemical होता है, नेचुरल केमिकल्स भी केमिकल्स होते हैं। सिंथेटिक का मतलब लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करके जब रिएक्शन किया जाता है, जो केमिकल प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स। केमिकल, नेचुरल केमिकल क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है और उसको हम लेबोरेटरी में रिएक्शन करवा के केमिकल प्रिपेयर करते हैं, जो नेचुरल केमिकल होता है। सिंथेटिक, नेचुरल दोनों आप यूज कर सकते हो अपने फॉर्मुलेशंस में टिल सर्टेन परसेंटेज, ठीक है। इस चीज के लिए वरी मत हो, और
और बहुत बड़ा मिथ है जो सब लोग डराते हैं जो भी ये होममेड चीज दिखा रहे हैं। सो सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स भी सही है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी सही हैं, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज उसका डिसाइड किया गया है कि अगर कोई ये वाली चीज आप 5% से ज्यादा डालोगे तो आपको हार्म करेगा, ये वाली चीज आप 6% से ज्यादा डालोगे तो आपको हार्म करेगा, ठीक है। तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन दैट। हम जो यूज करेंगे दैट विल बी नेचुरल केमिकल्स। थर्ड डिफरेंस, हम अगर मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन वहां पे प्रोवाइड नहीं होती। अगर हम खुद बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अगर हमें 3-4 प्रॉब्लम्स हैं तो हम उस 3-4 चीजों के जो सॉल्यूशन है वो अपनी क्रीम में डाल सकते हैं। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो मुझे अलग से ड्राइनेस की क्रीम खरीदनी पड़ती है, अलग से मुझे SPF खरीदना पड़ता है, अलग से मुझे एंटी एजिंग क्रीम खरीदनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं घर पे बना रही हूँ, मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम मुझे पता है, तो मैं एक ही क्रीम में सारी चीजें डाल सकती हूँ, जिससे कि क्लाइंट का पैसा बचेगा, दूसरी उनको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी बार बार उन चीजों को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है आज के टाइम में। ओके, बिफोर मूविंग अहेड, you will get everything, but still I request you to make your own notes because it will help you more than what I'll give you. शबीना जी, मैं हर चीज हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ एक के बाद एक। Ingredients list will be same and I'm not saying every brands are doing the same thing, ठीक है। The second thing, आपको ingredients same मिलेंगे but उसकी जो percentage है ना वो आपको कहीं पे भी mention नहीं होती है। Okay, clear with all till here? We have just completed the basic part, the difference in all three things and the difference in market products and homemade products. Okay, let's move ahead with the formulation part now. ओके, सो जो भी मेल्ट एंड पोर सोप बनाते हैं उनको पता होगा बेस पे काम करना अलग चीज होती है, स्क्रैच पे काम करना अलग चीज होती है। ओके, सो द पीपल हु आर न्यू, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्रीम बनाना सीख रहे हैं, लोशन बनाना सीख रहे हैं, इट मीन्स बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है। पहला चीज क्या डलेगा, बट इन अवर इंडस्ट्री वी डू गेट अ बेसेस एज वेल, रेडीमेड बेस हमको मिलते हैं क्रीम के। अब वो क्रीम आप खरीद लो, अब उसको आपको एंटी एजिंग बनाना है, एंटी एक्ने बनाना है, या एंटी टैनिंग क्रीम बनाना है, जो भी आपको प्रॉपर्टीज डालनी है आप उसको अपार्ट डाल सकते हो, आपको पूरा क्रीम बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज फ्रॉम अ स्क्रैच, हम बिल्कुल बेसिक से अपनी क्रीम बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे regarding the base formula for lotion, creams and a body butter. So base formula is something means that particular product must need that ingredients to prepare that thing. So lotion को बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि इसमें ये चीज तो जरूर डली होगी? What you think lotion must have as an ingredient to prepare it, which is very much required. Without that we can't prepare a lotion. What do you think? So please raise your hands. The basic ingredient for a lotion. Yes. Someone is logged in with name of Happy. Okay. Sumat ji. Ma'am, water. Water, okay. Anything else? Okay. Shalini ji. Glycerin. Without glycerin can't prepare a lotion. क्या नहीं बनेगा? ओके, वन मोर थिंग, लोशन और क्रीम का बेस फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों चीजों के लिए कर रहे हैं। ओके, क्या ग्लिसरीन के बिना हमारा लोशन या क्रीम नहीं बन सकता? इज इट सो? नो, इट्स नॉट अ
very much required product which we do use in a base formula. Okay, Sia? Ma'am, water and oils and butters. Okay. Oils in lotion and some quantity of butters also in cream. Okay, fine. ठीक है. Coming to the Shalini ji. Yeah, water is the basic ingredient. ठीक है, पानी तो जरूर डालना पड़ेगा. अगर आप बाहर से भी बेस क्रीम ले रहे हो तो उसमें पानी डाला होगा. हम भी बना रहे हैं लोशन तो पानी तो डलेगा लोशन क्रीम में. ठीक है. और कुछ? चलो, we have some things in a chat box. Let's see that. Can you tell how much percentage of synthetic is good? Dear, we are in a starting stage. We will learn about the formulation. So it's 3 days we have for these things. Glycerin, no. Water and oil, okay. Water, okay. Water, okay. Distilled water, oil and water. Beeswax, blender. We are talking about ingredients here. Perfume, no. Not at all. बिना परफ्यूम के बनाओ लोशन बन जाएगा. कोकोआ बटर, see there is no particular butters. Butter means butter. वो कोई भी हो सकता है. Fragrance, no, not necessary. Essential oils, not necessary. Not necessary. Cocoa butter, अगर wrong, no. Essential oils, no. I am asking for the ingredients without which we can't prepare a lotion. बन नहीं सकता lotion. So essential oil नहीं डालो, it will again take a texture of a lotion. बन जाएगा आपका lotion. Fragrance मत डालो, आपको खुशबू नहीं चाहिए तो बन जाएगा आपका lotion. So the main answer we have, that is water and oil. This is the two main things which is required to prepare a lotions and creams. Fine. Well enough. Okay, now water and oil. If we add water and oil together, आप पानी का एक ग्लास ले लो और उसमें तेल डाल देना. Is it possible to mix them? No. पानी will flow above and water will be like same. तो पानी और तेल मिक्स नहीं हो सकता. एंड उसको मिलाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. These are the small things you need to write it down. This process called a emulsification. पानी और तेल को मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं. ओके, सो पानी जरूरी है क्रीम बनाने के लिए, लोशन के लिए भी पानी जरूरी है. तो अब पानी और तेल को हम डाल रहे हैं, तो अगर हम इमल्सिफिकेशन नहीं करेंगे उसके अंदर तो हमारी क्रीम क्या होगा? पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, which we don't want. So what we need? बेस में पानी और तेल डाल रहे हैं, so we are supposed to do a emulsification as well. So because water and oil not get separated equal with each other, so the next ingredient we do require, that is emulsifier. For the emulsification process, the third ingredient we do require is a emulsifier. So, उसके बिना काम नहीं चलेगा. ठीक है, पानी तेल डाल रहे हैं, बेस है हमारा, उसके एमल्सिफायर नहीं डालेंगे तो काम नहीं चलेगा. प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और एमल्सिफायर इज द ingredients which is used to do a emulsification process. Now the last thing, पानी डाल दिया, तेल डाल दिया, emulsification process कर दिया, मिला दिया उन दोनों को. Now the last is preservative. Okay, so if we will not add a preservative, so because it is having a water into it, and if it is not even, then too we need a preservative to sustain our products for a long period of time. ठीक है, preservative क्या करता है? It will sustain our products for long period of time. हमारे products को लंबी life देता है ताकि हमारा product खराब ना हो. पानी जिन प्रोडक्ट्स में जाता है उसमें प्रिजर्वेटिव डालना वेरी मस्ट रिक्वायर्ड. पीपल डू आस्क मी इफ वी आर प्रिपेयरिंग अ सच प्रोडक्ट व्हिच डोंट हैव अ वाटर इन इट, इज इट सपोज्ड टू ऐड अ प्रिजर्वेटिव और नॉट? देन ऑलवेज yes. Why so? Because to cook a food it's not necessary to have a finished product a very good, but we do require every ingredient
which is good enough. मेरे को टमाटर भी सड़े हुए नहीं चाहिए, मुझे पनीर भी अच्छा चाहिए, मुझे टमाटर भी अच्छा चाहिए, और मुझे सारी चीजें अच्छी चाहिए अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने के लिए, right? So each and every ingredient complements each other. Even if you don't have a water into your product, then again you need to add a preservatives into your formulations, right? So first, water is necessary to make a cream. For lotions as well, oil for cream and lotions as well, oil and slash butter, okay, both you can mix match whatever you do want to prepare as per the formulation. The next is emulsifier, which do a emulsification process to mix water and oil together. The last one is a preservative, which sustains your product for a long period of time. पानी चाहिए, तेल चाहिए, दोनों को मिलाने के लिए इमल्सिफिकेशन प्रोसेस करना है. उस इमल्सिफिकेशन प्रोसेस को करने के लिए इमल्सिफायर की रिक्वायरमेंट होती है. इमल्सिफायर मतलब वो प्रोडक्ट जो इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं. लास्टली प्रिजर्वेटिव क्या होता है? जो आपके प्रोडक्ट को लंबे समय तक चलाता है, खराब नहीं करता है. ठीक है, सो लेट्स सी, दीज आर द बेसिक प्रोडक्ट्स जिसके बिना हम लोशन बना ही नहीं सकते हैं, क्रीम बना ही नहीं सकते हैं. तो अब सिंपल सी चीज है, अगर मैं मार्केट से बेस ले रही हूँ क्रीम का या लोशन का, इट मींस उसमें पानी होगा, तेल होगा, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, इमल्सिफायर होगा इसका मतलब, और लास्टली प्रिजर्वेटिव भी होगा उनके प्रोडक्ट में. अब बस हमें फाइनल टच क्या देना है? by adding up properties of anti-aging, anti-acne or whatever it is. So this is the main base formulation. अगर जिसको बेस पे काम करना है तो वो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाल सकता है, और जिसको स्क्रैच से सीखना है वो हम आगे सीखेंगे. Okay, let's see now. Okay, so base formula for lotions and creams will be water, which is required, oil again, which is necessary to add to mix them all. We need an emulsifier, and lastly a preservative. When we add all 4 ingredients all together, we will get our lotions and creams, right? Now it depends what all properties you want to give it to your lotion or creams, right? Okay, one very important question from you guys. Why is it necessary to take a water and oil for lotions and creams? Why? In my session, I don't will give you ki lotion, pani, tel dalna hai, dal do. Why? Reason behind this. Ma'am, can I tell? Yes, please, dear. I think our skin, I think not, I know that this our skin need both water and oil to keep it is healthy and glow. Due to the climatic reasons or any pollution reasons, the balance was making disturbed. So to maintain that, we have to use both water and oil. Okay, good enough. The body lotions for the same thing, I think. Okay, good enough. Okay, anyone else who can try? Due to its absorption property? No. Can I tell? Yes, dear. I think the water is mainly for the hydration of the skin, because our skin really needs hydration after going out. And probably the oil is because our skin naturally gives out a little bit oil which is washed away. And practically, I think we need to apply some oil as well. Okay, very good. Okay, so it's very good enough. For moisturizing the skin. Done. Complete. Okay. So why we do need a water and oil for our lotions and creams? Because we are applying creams and lotions for face, for body. It means in our skin, and in our skin we do have oil and water. हमारी skin से क्या निकलता है? पानी और तेल. Sweat with the form of water with the form of sweat and so many other things. Oil सिक्रेशन होता है, सब जानते हैं, सीबम की वजह से. तो जिस चीज से स्किन बनी है उसमें हमें वो चीज डालना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ बेस, अ वाटर एंड अ oil. Without that we can't prepare our lotions and creams. That's the main formulation. We do require water
and oil, because in our skin we do have both the things. Fine. Okay, now coming to the formulation of body butters. Okay, what will be the base for a body butter? क्या चीज important है उसमें डालना to make a body butter? Please raise your hand. Yes, Dharmika ji. Butter, oil, and yeah, that's all. Butter and oil is the main thing. I don't think a preservative is needed. Okay, fine. Yes, Sumat ji. Due to fat content, fat ज़्यादा होना चाहिए butter में. What we Because, add for the fat? Basically oil, some heavier oils like castor oils. I don't know. ठीक है. Mahera ji. Ma'am, butter, body butter, and essential oil. Okay. ठीक है. Fine. So as I have told you that body butters don't have a water into it. It's a total and purest form of water. Oh, sorry, oils and butters. So it means it is used for a dry skin people. And the major ingredients we need to add into our butters, that will be oil, butter, and lastly a preservative. As I explained before, it's not necessary to have a water into your product. We need each ingredients up to the point to get the final results. ठीक है, I've given you the example. अगर मैं कोई dish बना रही हूँ, so I want each ingredients to be fine. ठीक है, अगर it's not important पानी डाला है या नहीं डाला है, it's important that I want to sustain my products for a long period of time, and I don't know from where we get the products, for till what time it will sustain. Yes, raw materials have a shelf life of a year, but again अगर हम इंसानों से गलती हो सकती है तो रॉ मटेरियल से नहीं हो सकती. मे बी इट विल give the impact after 2 months itself, after 3 months itself. So we can't take a chance. We need to add a preservative into our product. So again, why we are not using a emulsification process into a body butters? Why we are not using a emulsifiers here? Ma'am, because there is no water in it. Good. No, naturally butter and oil will mix together. No need to just emulsify and just mix it. Okay. So both are of the same property, so not necessary to emulsify. Good enough. Okay, so because body butter not contains a water into it, so we don't require to mix a water and oil together. तो हमें जो प्रॉब्लम थी वो पानी और तेल को मिक्स करने की थी, और यहाँ पे हमें वो काम करना ही नहीं है. हम पानी डाल ही नहीं रहे, तो हमारा मिक्स करने का कोई नीड नहीं है. That's why we are not using a emulsifier. We are not taking a water. We are even not we just need oils, body butters, and lastly a preservative to sustain our product for a long period of time. By using this thing, you can prepare your bases. If you want to take your bases, it means they have these ingredients in it, and lastly you can add upon the things whatever you want to make it for. Okay, let's see. We are done with the base formula for lotions and creams, that is water, oil, emulsifier and preservative. जब हम पानी, तेल और उसको मिक्स करने वाला इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, साथ में प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खराब नहीं होने देता, इनको मिलाने पे हमें अपना लोशन और क्रीम मिल जाता है. ये हमारा बेस है. अब इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं एंटी एजिंग के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो आप अलग से डाल सकते हो. दिस इज अ बेस फॉर्मूला जिसके बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा. Okay, the second one, we have a body butter. So to prepare a body butter, we just need a butter, because we don't need a water. It is the purest form of fat, and we do use it for a dry skin people. Second, carrier oil, and third, preservative to sustain your product for a long period of time. When we mix all these three things, we will get a body butters. Butters चाहिए, oil चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पानी नहीं डाला है तो हमें पानी तेल को मिक्स नहीं करना है, इसीलिए हम एमल्सिफायर का यूज नहीं करेंगे. लास्ट में प्रिजर्वेटिव डालेंगे जो हमारे प्रोडक्ट को खराब नहीं होने देगा. सो दिस इज द बेस फॉर्मूला. Now coming to the formulation with the percentages.
Okay, let's start with lotion basic formula with the percentages. Okay, so please make your notes. Again, I'm saying the first thing, water or aloe vera gel, please write it as a base. Okay, so this is our base. The second is stearic acid. Third is emulsifying wax, butters and carrier oils, fragrance and preservatives. So here one by one I'll explain you everything. The first thing, water or aloe vera gel. Don't take it water aloe vera gel. Take it with the name of base here. I will explain you with the part of base what we all can take. The second one is stearic acids. What is a stearic acid here? Stearic acid is a thickener. So what it do, because lotion is having more of water, so what happens, we get a very liquidy consistency because of that. And if you want to make your lotion little bit thicker, so you need to add a stearic acid till 3 to 6% into your lotion. The third one is emulsifying wax. So this is the thing, this is the ingredient which will do emulsification to mix water and oil. So the percentage of this ingredient will be 3 to 6%. इसका काम है पानी और तेल को mix करने का. Next, we need a butters and carrier oils, that is up to 6 to 30%. Fragrance is 0.5 to 1%. Preservative 0.1 to 0.5%. Percentage of fragrance and preservative will be same for lotion, क्रीम्स एंड बॉडी बटर. सो उसको याद कर लो. फ्रेग्रेंस 0.5 से 1 जाता है, प्रिजर्वेटिव 0.1 से 0.5 जाता है. ठीक है, आधा मतलब 1 ग्राम भी हम पूरा नहीं लेते, 1% भी हम पूरा नहीं लेते हैं अपने प्रोडक्ट में, सिर्फ 0.5% जाता है. एंड द परसेंटेज विच इज सेफ टू यूज फॉर अ प्रिजर्वेटिव इज अप टू 7%. ठीक है, 7% तक हम अपने प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे तो हम 1% भी पूरा नहीं डाल रहे हैं. ठीक है, सो इट्स टोटली डिपेंड कि आप अपना फॉर्मुलेशन किस तरीके से क्रिएट कर रहे हो. सबसे पहला वाटर एलोवेरा जेल जो कि बेस है. बेस क्या होता है, कैसे होगा, क्या क्या डाल सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. 65 to 80% होता है, लेकिन कभी भी बेस को कैलकुलेट मत करना. कैसे करेंगे, बेस हमेशा अपने आप निकल के आता है. सेकेंड चीज, स्टेरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे. स्टेरिक एसिड हमें हेल्प करेगा हमारे प्रोडक्ट को थिक करने में. क्रीम्स लोशन में एक थिकनर का काम करता है, गाढ़ा करने का काम करता है. स्टेरिक एसिड डालना है, 3 to 6% डालेंगे. इमल्सिफाइंग वैक्स एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो वाटर और ऑयल को बाइंड करने के काम आता है, तो 3 to 6% डालेंगे. बटर्स कैरियर ऑयल 6 से 30% डालेंगे. नाउ इट्स डिपेंड्स, इट्स आप 1 बटर डालो, आप 1 कैरियर ऑयल डालो, 2 बटर डालो, 3 कैरियर ऑयल डालो, 4 बटर डालो, 1 कैरियर ऑयल डालो, या कैरियर ऑयल मत डालो, सारे बटर डालो. यू कैन फॉर्मुलेट इन एनी वेज, बट द टोटल परसेंटेज इंक्लूडिंग बटर्स एंड कैरियर ऑयल शुड नॉट एक्सीड 30. ओके, सो टोटल परसेंटेज वी नीड इन बिटवीन 6 to 30%. लास्टली फ्रेग्रेंस 0.5 to 1% डालेंगे. प्रिजर्वेटिव 0.1 से 0.5 डालेंगे. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज अ बेस. इसको बस अभी के लिए याद कर लो. स्टेरिक एसिड थिकनर होता है. इमल्सिफाइंग वैक्स पानी तेल को मिक्स करने का काम करेगा. बटर्स कैरियर ऑयल्स हमें मॉइस्चर देता है. जो बेस होता है वो हमें हाइड्रेशन देता है. फ्रेग्रेंस हमें खुशबू देगा. किसी भी चीज, लेवेंडर क्रीम बना रहे हो, आमंड क्रीम बना रहे हो, तो सारे तरीके के फ्रेग्रेंस अवेलेबल होते हैं, वो आप अपने प्रोडक्ट में डाल सकते हो. कितना डालना है, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 से कम नहीं होना चाहिए. प्रिजर्वेटिव अप टू 0.1 to 0.5%. सेकेंड, कमिंग टू द cream basic formula. So here we have again the base, that is water and aloe vera gel. Second, because we are adding a oil and water into our formulation, so we will add a emulsifying agent, that is up to 6 to 9%. Butters carrier oil 20 to 35%. Butters carrier oil can be in any number as per your choice, but it should not exceed the percentage I have given you. Fragrance and preservative will be same for all three. Okay, now one thing, if you can see, the base, that is a water, is up to 60% and oil is 35%, right? Again, in cream, water is in higher percentage, but if we will
compare it with cream, oh sorry, lotion, so it is 80% here, and in creams it is only 60%, right? So अगर मुझे कंपेयर करना है लोशंस और क्रीम्स में, yes, lotion is more of water up to 80%, cream is less in water, that is 60%, but in their separate formulation, always base is in higher proportion. Okay, we never calculate a base, we will calculate rest of the products and we will get our base calculation. Okay, how we need to do that we will see, but to make a lotion it's more necessary to add a stearic acid. In the case of creams as well, in the case of creams as well, sometimes we need a thickener. Okay, so in that case what you can do, you can add a stearic acid into creams as well. ठीक, लोशन क्रीम्स के लिए स्टेरिक एसिड थिकनर का काम करेगा. क्रीम बना रहे हो, अगर आपको उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी करनी है तो आप उसमें स्टेरिक एसिड का इस्तेमाल करोगे. Why I have only mentioned in the lotion part? Because lotion is more of water content, because of that we get the very liquidy consistency, so we make it thicker with the help of stearic acid. ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोशन क्रीम्स को बनाने के लिए. पानी यानी कि बेस हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. स्टेरिक एसिड गाढ़ा करने के काम आता है. लोशन को गाढ़ा करना है, क्रीम को गाढ़ा करना है, तो आपको स्टेरिक एसिड डालना पड़ेगा. कितना परसेंट? 3 to 6% के बीच में. प्रिजर्वेटिव और फ्रेग्रेंस क्रीम, लोशंस और बॉडी बटर्स में सेम रहता है. फ्रेग्रेंस 1% से ज्यादा नहीं डलती और प्रिजर्वेटिव 0.5% से ज्यादा नहीं डलता है. स्टेरिक एसिड लोशंस में आपको रिक्वायर्ड होता ही होता है. क्रीम्स में कभी होगा कभी नहीं होगा, डिपेंड करेगा आपके फॉर्मुलेशन में आप कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे हो, पानी कितना डाल रहे हो, ऑयल कितना डाल रहे हो. तो उसको गाढ़ा करना है तो ऐड अ स्टेरिक एसिड इनटू दैट. कैरियर ऑयल्स, बटर्स कितने भी हो सकते हैं. एंड नंबर, सो इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू ऐड. अगेन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, you can mix match your ingredients as per your choice or a client's requirement, but जो परसेंटेज बताया उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए. उसका टोटल परसेंटेज आपको निकालना है. सिर्फ बटर्स डालो, सिर्फ कैरियर ऑयल्स डालो, अप टू यू, और सारे मिक्स करके डालो, दैट्स अगेन अप टू यू. इमल्सिफाइंग इमल्शन एजेंट जो हमने लिया है यहाँ पे, उस इंग्रेडिएंट का नाम है इमल्सिफाइंग वैक्स. सो जो हमारा वाटर एंड ऑयल बाइंड करेगा, दोनों में चाहिए, अलग अलग परसेंटेज में चाहिए, तो उसको याद कर लेना. Okay, lastly coming to the body butter percentage, and then we will formulate how to do the formulation for this thing. So the formulation of body butter is very easy. We are not adding a water. We don't require an emulsifying agent. We just need a butters. We need water. Oh, sorry, we don't need a water. We need a butters. We need a oil. We need a preservative, and lastly, we need a fragrance. Okay, fragrance and preservative, you need you know the percentage of fragrance and preservative, that will be same for all three. The rest, body butter and oil, we will divide it into a equal proportion, that is 50-50%. Okay, so it's done. Let's come to the body butter basic formula. That is butters 40 to 50%, carrier oils 40 to 50%, fragrance 0.5 to 1%. The last preservative is 0.1 to 0.5%. Okay, so we are done with the differentiate in all three, when to use, how to use, where to apply, why is the base formula and everything. We have cleared with the market product and a homemade product about the chemicals, batches and everything. Customization we have done with the base formula, what is very much required to prepare a lotion and cream and body butter. Without that we can't prepare it. And the formulation also we have seen that. Now इट्स टाइम टू फॉर्मुलेट योर प्रोडक्ट. मैंने आपको परसेंटेज बता दी है, बट उसको ध्यान रखना, उसको क्या कितना डालना है, अब आपको कैसे समझ आएगा, राइट? सो वी विल सी टू फॉर्मुलेट द लोशन फर्स्ट, एंड we will see how to make a cream for different kinds of skin type. So I'm again opening a slide of skin lotions formulation.
इसको याद कर लो, इस फॉर्मुलेशन से हम अब एक लोशन बनाने वाले हैं, कौन सा चीज कितना डालना है, सो इट्स डिपेंड नाउ. So stearic acid we need 3 to 6%. If I'll talk about the emulsifying agent, 3 to 6%. Butters carrier oils up to 30%. Okay. So let's see. Okay. Let's prepare lotion for the person who is having a oily skin. Okay. I am saying it's just a 10%, I guess, what I'm giving you. The rest 90% you need to explore, because in 3 days I can't explain you like 100 plus formulations. So I'm just giving you the ideas how we need to formulate the things. So let's prepare a lotion for oily skin. Complete. How much lotion we are making? That is 100 gram. Okay, what all ingredients we do require? Please unmute yourself and you can speak it now. Water or aloe vera gel, 65 to 80%. Very good. Base. So base, as I have told you, we never calculate the base by ourselves. We will get that in last. The second, what we do require? Stearic acid. Okay, stearic acid. The third thing? Emulsifying wax. Emulsifying wax. Emulsifier. Okay, emulsifying wax I have added. Next. Butter carrier oil. Oils and body butters. Okay, now the next. Fragrance. Okay. Preservative. Right. Okay, fine, good. Okay, now it's time how you will decide that what we need to add, how much. Let's start with because we will not calculate the base by ourselves, so we will start with the oils and body butters. So what is the percentage basically for lotion? Basically 65 to 80% water. 65 to 80% of water. No, it's a wrong answer. Please, someone else speak. It is 6 to 30% of Very oils good. and butters. Very good. So oils and body butters, we are supposed to add 6 to 30% for making a lotion. So I'm confused what I need to add. 6%, 10%, 20%, 25%, 30%. I have a lot of difference in it. So let's see for whom we are making. We are making for oily skin people. So the maximum limit is 30%. मैं क्या इसमें 30% डाल सकती हूँ oil butters? No. Okay. No. So it is clear that we need to reduce the quantity of oils and body butters as much we can. Okay. So the second thing, if the person is having a dry skin, so we will consider it in the higher stage, that is up to 30%. If the person is having a normal skin, we can consider 20-25%. But if the person is having a oily skin, it means we need to add oils and body butters in a very less amount. So suppose we are adding a 15% here. It's too less, so I'm taking a 20%. So 20% of 100 gram will be 20% of 100 gram will be 20 grams. Everyone know how to calculate the percentage? 20 divided by 100 into 100, because we are making a 100 gram of product. So we will get a 20 gram of oils and body butters here. Okay. Now we can see that we are adding less of oils and body butters here, very less. So it means because we are making it for oily skin people, that's why I'm adding a very less amount of oils and body butters. In this case, I can say because of lot amount of water, my lotion will get very liquidy. So what I need to add? Stearic acid, that is
maximum because we are adding a more of water and less of oil. अगर मैं यहाँ पे oil की percentage 30 तक रखती, इसका मतलब उससे मुझे thickness मिल जाएगी. Stearic acid में कम से कम डालती, 3% डालती या 4% डालती, but क्योंकि मैं ये oily skin के लिए बना रही हूँ तो मैं कम से कम percentage यहाँ पे oils body butters का लूंगी. अगर मुझे 6 से 30% बोला गया है तो 30-25 में dry skin वालों के लिए consider करूंगी और 20-25 में normal skin वालों के लिए consider करूंगी और 20 से कम में तब चली जाऊंगी जब मैं ऑयली स्किन वालों के लिए बना रही हूँ. अब पानी, जैसे ही मैंने ऑयल कम किया ऑटोमेटिकली पानी की कंसिस्टेंसी बढ़ गई और पानी की कंसिस्टेंसी बढ़ गई इसका मतलब टेक्सचर लिक्विड ही हो गया. अब उसको मुझे गाढ़ा करना है, सो मेक देम अ थिकर. वी नीड अ स्टेरिक एसिड एंड इन बिटवीन 3 to 6% आई विल टेक अ टोटल 6% so that the consistency will good. So 6% of 100 gram will be 6 gram. Okay. Coming to the fragrance part. So fragrance needs to be in between 0.5 to 1%. I always request you to add a minimum of fragrance into your product because all people are not very comfortable with your fragrance. So even 0.5 will work good for your formulation. So I am adding a 0.5% of fragrance into my 100 gram of formulation. So I will take a 0.5 gram. Okay. Again, same as preservative, if I'll have an option of 0.1 to 0.5, and we all know because of water, the risk factor is more. It depends totally on the water, कि हम कितना डाल रहे हैं, and in this formulation, we have a more amount of water. So because of that, we need to add a preservative, which is in the exceeding amount, that is up to 0.5%. That will be 5 gram for us. Now the percentage of emulsifying wax is in between 3 to 6%. 3 to 6%. So because we need to mix a water and oil together, but the oil is very less in amount, तो पानी में तेल मिक्स होता है या तेल में पानी मिक्स होता है? What do you think? पानी में तेल मिक्स होता है. इसका मतलब पानी तो हमारे पास अच्छा खासा है, तेल कम है, इसका मतलब हमें इमल्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लेस है ना. जो हमें मिक्स करना है वही कम है, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. पानी तो मिक्स नहीं करना है, हमें तेल पानी में मिक्स करना है, राइट. वी नीड टू मिक्स अ oil and butter into our water, so we will take a emulsifying agent in a less amount. So in between 3 to 6%, I will suggest you to take a 4%. That is 4 gram. Now lastly, we need to calculate all these things. So 6 gram done, 4 gram done, that is total 10 gram. 20 gram I have taken oils and body butters, that is 30 gram. And lastly 0.5 and 0.5 will be 1, so 31 gram. So we are making a formulation for 100 gram and 31 gram is already occupied, so we are left with 59%. 69. Okay, so 69 ml we will add for our lotion which we are making for the oily skin people. So how you need to do that, it's totally depends the type of skin, the problem of the skin. This formulation is according to the skin type. The later on when we will discuss about the ingredients tomorrow. ml and gram is same? Yes, you can consider it same. It's a very little difference, so we can consider with the weight of packaging and everything. Okay, so one doubt, ma'am. We will clear the doubt later on. But first, listen. 0.5 grams is the fragrance. We will discuss weight here. Okay, so this is the formulation particularly for the oily skin people. If you want to make it for a normal skin people, so again you will increase the little bit quantity of your oils and body butters. Automatically the proportion of water decreases, the proportion of base will decrease. Fragrance, it again I will always say to take it in a very less amount. Preservative depends how much water we are taking. If we are taking a more amount of water, we need to add a more amount of preservative as well, but not exceeding to 0.5%. If we are taking a less amount of water and not we are even not taking a water, so 0.2 gram, 0.3 gram will work for you. Okay, so stearic acid, how stearic acid will work?
Stearic acid is a thickener. If the proportion of water is higher, if the proportion of base is higher, so it means you need to make the texture thick, and then you will need to add a stearic acid. How much percentage depends on the water quantity. Okay, so this is mainly the formulation of lotion for oily skin people. You can make it for a dry skin people, you can make it for a normal skin people. Let's clear it with the doubt, then we will take one more formulation for cream. Please raise your hands, don't unmute yourself and speak. Okay, till that time we have a queries. Yes, you can make base, flow, consistency, and hydration for skin, so the skin absorbs light and weight, Vaseline, mineral oil, because there is no way to put a formula. You will get the recording, Fatima, so you can check it out and take the screenshots. Same to Sia. Okay, so yes, Mahira ji. No, ma'am, it was by mistake. Sorry. Okay, no problem. Sia? Ma'am, I just wanted to inquire about the emulsifying wax. You said कि जो चीज कम है ज्यादा में ऐड करनी है, तो emulsifying agent that we are using should be less. Okay, am I right? So I'm clearing it out once again. What emulsifier do? It helps to mix us a water and oil together. Okay, so the one more thing, we don't mix water into oil. We always mix oil into water, right? So basically what we need to mix every time, the oil, not a water, because always water in a higher percentage and oil in a lesser percentage. So always consider the proportion of oil. If oil is less, the stearic acid will be, emulsification will be less. If the oil is more, the emulsification will needs to be more. जो चीज हमें मिक्स करनी है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा emulsification process करेंगे. If we want to mix oil in higher percentage, we will take emulsifying in higher percentage. If we want to mix less percentage, so we will take emulsification in less percentage. Clear? Yes, ma'am. Fair enough. Okay, so one more time I am explaining this formula for the people who are comfortable with Hindi. So just have a look one more time. So यहाँ पे जो हम formulation, please be on mute, rest everyone. Okay, so यहाँ पे जो मैंने एक formulation सिर्फ आपको करके दिखाया है, तो आप इससे oily skin, normal skin, combination skin, dry skin सब के आपको बनाना है. आई एम गिविंग यू आइडिया कि किस चीज पे कैसे काम करना है. सो फर्स्ट थिंग, बेस हम कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं. अब बेस में क्या क्या आता है, वी विल डिस्कस इट टुमारो व्हेन वी सी द इंग्रेडिएंट्स ओवरव्यू. कल हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे बेस में क्या क्या आता है. तो बेस मैंने कुछ भी नहीं लिया था स्टार्टिंग में. सेकेंडली, हमें स्टेरिक एसिड चाहिए होता है गाढ़ा करने के लिए, इमल्सिफाइंग वैक्स चाहिए होता है पानी तेल को मिक्स करने के लिए, ऑयल्स बॉडी बटर चाहिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायर्ड है, हमारी स्किन को उसकी रिक्वायरमेंट है, फ्रेग्रेंस खुशबू के लिए, प्रिजर्वेटिव लंबे समय तक चलने के लिए. तो सबसे पहले प्रिजर्वेटिव से स्टार्ट करेंगे, नहीं प्रिजर्वेटिव से नहीं करेंगे, ऑयल्स और बॉडी बटर से करेंगे, क्योंकि मैं अपना लोशन उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है. तो अब आप उस पे क्या करोगे, आप अगर उसको और ऑयल दे दोगे तो वो तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. ऑयली स्किन वालों को ऑयल तो दे नहीं सकते, ठीक है. तो हम अब ऑयल जो है, बॉडी बटर जो है, कम से कम लेंगे. तो हमारी परसेंटेज क्या थी, 6 से लेके 30% तक हम अपने लोशन में पानी या ऑयल या बटर डाल सकते हैं. तो अब मैं 30% लूंगी तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो 25-30 आप उन लोगों के लिए लोगे जिनकी स्किन ड्राई है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा ऑयल मिले, मॉइस्चर उनको ज्यादा मिले. अगर मैं बात करूं नॉर्मल स्किन वाले लोगों के लिए, तो ना ही हम उनको ज्यादा पानी तेल कम दे सकते हैं ना ज्यादा दे सकते हैं, तो उनको मिड देंगे, यानी कि 20% या 25%. अब मैं बना रही हूँ ऑयली स्किन वालों के लिए, तो मुझे कम से कम इसमें ऑयल डालना है. तो मैंने यहाँ पे 20% लिया है, आप 15% भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने यहाँ पे 20% लिया है. अब 20% 100 ग्राम का, क्योंकि मैं 100 ग्राम प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो 20% 100 ग्राम का 20 ग्राम होता है. तो मैं 20 ग्राम टोटल अपना पानी तेल और बटर लूंगी. चाहे मैं 1 बटर लूं, 2 बटर लूं, 4 कैरियर लूं, बटर नहीं लूं, सारे ऑयल लूं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन
कि मैं कैसे रेडी कर रही हूँ, लेकिन जो लूंगी वो 20 ग्राम से ज्यादा नहीं लूंगी। अब क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ऑयल कम से कम डालूंगी, क्योंकि मैं ऑयली स्किन वालों के लिए बनाना चाहती हूँ। अब मैं ऑयल कम डाल रही हूँ, इसका मतलब पानी ज्यादा हो जाएगा अपने आप, ठीक है। सो ऑयल पे डिपेंड करता है, पानी कम ज्यादा हो रहा है, ऑयल कम तो पानी ज्यादा, ऑयल ज्यादा तो पानी थोड़ा सा कम रहता है, उससे ज्यादा ही है। तो अब यहाँ पे क्योंकि पानी तेल और बटर मैंने कम लिया है तो पानी ज्यादा हो गया। अब पानी ज्यादा हो गया इसका मतलब मेरी मेरा लोशन पतला हो गया। अब मुझे उसको गाढ़ा करने की जरूरत है। तो अगर मुझे गाढ़ा करने की जरूरत है तो मैं यहाँ पे 6% स्टेरिक एसिड डाल रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि गाढ़ा तो मुझे करना ही है लोशन में, ठीक। लेकिन पानी ज्यादा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा स्टेरिक एसिड लूंगी गाढ़ा करने के लिए। लेकिन अगर मैं ड्राई स्किन के लिए बनाती तो मैं 30% ऑयल लेती, 30% ऑयल लेती, यानी कि जो वाटर है मैंने एक्सीडिंग अमाउंट लिया है ऑयल का, तो वाटर भी बिल्कुल जो बिल्कुल लेस है वो आ जाएगा। इसका मतलब मुझे स्टेरिक एसिड गाढ़ा करने की कम जरूरत है यहाँ पे, बट यहाँ पे मुझे ज्यादा जरूरत थी इसलिए मैंने 6% लिया है। 6% 100 ग्राम का 6 ग्राम होता है। उसके बाद मैं आती हूँ इमल्सिफाइंग वैक्स पे। तो कभी भी हम पानी को तेल में मिक्स नहीं करते हैं, तेल को पानी में मिक्स करने की जरूरत होती है। तो किसको मिक्स करना है? तेल को मिक्स करना है। तो तेल का प्रपोर्शन क्या है? कम है, इसका मतलब हमें इमल्सिफिकेशन की जरूरत कम है। अगर तेल ज्यादा होता है इसका मतलब हमें इमल्सिफिकेशन की जरूरत ज्यादा होती। तो अब तेल कम है तो इमल्सिफिकेशन की जरूरत भी कम है, इसीलिए मैंने 3 से 6% के बीच में 4% लिया है, जो कि 4 ग्राम होता है। फ्रेग्रेंस हमेशा कम से कम डालनी है, 0.1 से 1% बोला है तो 0.5 डालो, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, एलर्जी भी होती है, उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो हम इसमें कम से कम डालेंगे 0.5%। 100 ग्राम का 0.5 ग्राम होता है। प्रिजर्वेटिव, क्योंकि पानी की क्वांटिटी मेरे प्रोडक्ट में ज्यादा है और पानी कारण होता है जिसकी वजह से जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। तो डालना तो सब में है प्रिजर्वेटिव, लेकिन इसमें पानी ज्यादा है तो क्या करेंगे? प्रिजर्वेटिव ज्यादा डालेंगे। ज्यादा मतलब 0.5 से ज्यादा तो डाल नहीं सकते, तो 0.1 से 0.5 के बीच में 0.5 में यहाँ पे लूंगी। तो 0.5% ऑफ 100 ग्राम अगेन 0.5 ग्राम हो गया। अब मैं इन सब चीजों का टोटल कर लूंगी। स्टेरिक एसिड 6 ग्राम लिया है, इमल्सिफाइंग वैक्स 4 ग्राम लिया है, दोनों को मिला के 10 ग्राम होता है। ऑयल बॉडी बटर टोटल मैंने 20 ग्राम लिया है, 30 ग्राम हो गया। फ्रेग्रेंस प्रिजर्वेटिव दोनों आधा आधा परसेंटेज लिया है, जो 1 ग्राम हो गया, तो 31 ग्राम। 100 ग्राम के लोशन में 31 ग्राम की जगह खत्म हो गई, तो जितना बचा यानी कि 69 ml वो हम अपने प्रोडक्ट में बेस डालेंगे। क्लियर विद एवरीवन? Done? Clear? Complete? Okay, so let's move to the formulation for cream. Body butter is easy, so once we get through with the ingredients overview, then we will see the formulations for body butters as well. But let's see the formulation, how to do the formulation for creams. Okay, now please be we will come up with this formulation now. इसमें हमें क्या करना है? बेस हम कैलकुलेट नहीं करते, we will not calculate a base. Second, emulsifying wax was 3 to 6% in my lotions, but here I need a 6 to 9%. Butters, carrier oils is 20 to 35%. There was only 6 to 30%. Fragrance and preservative will be same always. So here I am preparing something for a dry skin people. So making a cream for dry skin, कितना बनाऊंगी? 200 ग्राम बनाऊंगी. What we do require first, that is a base, which we will not calculate in the starting stage. The second, we need a oil and butters. Next, we do require emulsifying wax to mix water and oil together. Next, we do require a preservative. Next, we do require a fragrance. Next, I do require a stearic acid if required. Okay, so मैं लिख लेती हूँ. अब requirement है कि नहीं है वो हम बाद में देखेंगे. What else we do require है? Are we left with something? No. Okay, done.
So let's start with the oils and body butters again. The proportion for creams is in between 20 to 35%. We are making a cream for a dry skin people. It means we will give a more amount of oil and butters to them so that it gives moisture to them and get relief from the dry skin. So again, I'm taking an exceeding percentage, that is 35% of 200 gram will be 70 gram. The second thing is preservative, 0.5% always. So 0.5% of 200 gram will be 1 gram. If I'll talk about the emulsifying wax, so emulsifying wax is something जो मिक्स करने के काम आएगी और ऑयल्स और बॉडी बटर को मिक्स करने के काम आएगी डेफिनेटली. सो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ emulsifying wax, exceeding or lesser? Lesser. Is it so? More because we are adding more percentage of oils and body butters. तो अगर तेल ज्यादा होगा तो emulsifier ज्यादा लगेगा, कम होगा तो कम लगेगा. So the percentage of emulsifying wax is in between 6 to 9%, and I am taking a 8 or 9. You can take whatever. I am taking a 9% here. It will be a 18 gram. Okay. Coming to the stearic acid. So what do you think? Do we require a stearic acid into this formulation? Yeah, some little bit. Okay. So it's totally depend. Firstly, the texture, what you get, you can add it on lastly as well in the formulation. If you want to add, you can add in the last position once you get the texture. If you want to make it thick, you can add it. So but in this formulation I don't think so it needs, because I have taken a maximum of oils and body butters, right? So I'm taking a maximum of oils and body butters, जिससे जो पानी है उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रही है. ठीक है, तो जब मैंने ऑयल बॉडी बटर बिल्कुल ज्यादा लिया है, इससे ज्यादा मैं ले ही नहीं सकती हूँ क्रीम में, इसका मतलब ऑयल बॉडी बटर हमारी क्रीम को थिक कर देगा. So I don't require a stearic acid into this formulation. Once you get the done with the preparation, and lastly if you want to make it thick, you can add it. So there is no problem in that. Okay, coming to the preservative now. So preservative is depends on water level. The higher of water, the higher of preservative. The lesser of water, the lesser of preservative. Because I am taking more of oils and body butters, it means the base water will automatically decrease. It means the preservative are not supposed to take in a very high consistency. So I will take a 0.2% of preservative here. That is, that will be 0.4 gram. 0.4. Okay. So we will consider like this. Now we will calculate 70 and 18 will be 88, 88 and 1, 89, and I will consider it a 0.5. So 89.5 we are done with. So we are left with how much of base? 55 point. 55. For 55 into 2 for 255, 110 gram. How much of base we do require for this formulation? 110.5. 110.5 ml. Okay. So this will be the formulation for the dry skin people. So हिंदी के लिए क्रीम बना रहे हैं, ड्राई स्किन वालों के लिए 200 ग्राम की क्रीम बना रहे हैं. ड्राई स्किन वालों के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऑयल डालेंगे, इसका मतलब पानी कम हो जाएगा. पानी कम हो जाएगा तो इसका मतलब प्रिजर्वेटिव कम हो जाएगा. प्रिजर्वेटिव का कम मतलब 0.1 से 0.5 लेते हैं, तो मैं कम ले रही हूँ, 0.2 ले रही हूँ. 0.2 ग्राम 0.2% 200 ग्राम का 0.4 ग्राम होता है. फ्रेग्रेंस कम से कम लेनी हमेशा एडवाइजेबल है, तो 0.5% में ले रही हूँ. 0.5% 200 ग्राम का 1 ग्राम होता है. इमल्सिफाइंग वैक्स डिपेंड करता है पानी कितना है, ऑयल कितना है. अगर ऑयल ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा मिलाने की जरूरत है,
और ऑयल कम होगा तो हमें कम मिलाने की जरूरत है, यहाँ पे ऑयल ज्यादा है, ठीक है, सो आई एम टेकिंग एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ ऑयल, तो ऑब्वियसली मुझे एमल्सिफिकेशन की ज्यादा जरूरत है, तो 6 से 9% में मैं 9% लूंगी एक्सीडिंग अमाउंट. 9% of 200 gram will be 18 gram. Coming to the oils and body butters, so exceeding 6 से 35 से ज्यादा नहीं जा सकते क्रीम्स के लिए, so I will take a 35% for the cream for dry skin people and 35% of 200 gram, 35% 200 gram cream का 70 gram होता है. फिर मैं 70 को, इस 18 को, इस 4.4 ग्राम को और लास्ट में 0.1 ग्राम को टोटल कर लूंगी और अपने 200 ग्राम की क्रीम में से माइनस कर लूंगी, यानी कि इतनी जगह मेरी क्रीम की भर चुकी है, अब जो बचा वो पानी डाल दो, यानी कि बेस डाल दो, ठीक है. इट्स नॉट नेसेसरी कि बेस पानी ही होगा, क्या होगा वी विल डिस्कस इट टुमारो. सो आई होप till today's the things are clear to all. If you have any doubt, please raise your hands. Within 5 minutes we will wind up and I have a homework for you guys, so please don't leave in between. Mamta ji, do you have any doubt? No. Sia ji? No, ma'am. I have a doubt. Yes. Like I'm little bit confused between the preservative, like 0.4 grams for 200 grams, and for lotion of 100 grams, preservative is 5 grams. No, it was not 5 gram. It was 0.5. Wait. Okay, ma'am. It is 0.5, but yes, it's showing. Okay. It's 0.5. That's why we calculate 0.5 and 0.5. That is 1 gram. Okay, ma'am. Thank you. 6, 4, 10, 20, and this is 131. And then we have reduced it from 100. So it comes to 69. Okay, done, clear. I hope the things were clear. Please do see the recording again. All the small things are necessary. Try to make a formulation by yourself. It is just the formulations on the basis of your skin type, which is more important. This is the basic thing we need to take care of, and tomorrow we will see the ingredients overview, and then we will learn how to formulate our creams for as per the basis of skin problems. The today's homework is, please note it down, and it's necessary to do it if you will want to make a formula, become a formulator. So it's necessary so that you can formulate a different kinds of creams as per the skin problem. So today's homework is to search the extracts. Extracts, EXTRACTS, extracts. What is extracts? Little bit of hint how to do your homework, what is extracts and whatever. So extract is something which we call a water soluble compound. Okay, where we get extract from, where we get extracts, we get extracts from plant hormone, and because we get it from a plant hormone, it means it is a very natural ingredient which we add into the formulations. Very natural ingredient. Okay, so सबसे ज़्यादा natural चीज होती है extracts, because it's a plant hormone. We call it a water soluble compound as well. Extracts are the things which we calculate it in base. हम extracts को base में calculate करते हैं. जो भी हमने सारा formulation किया ना, जिसमें हमारा बेस लोशन में 69% निकला था, तो वहां पे हम एक्सट्रैक्ट को फिट करेंगे, ठीक है, बाकी फॉर्मुलेशन से कोई रिलेशन नहीं है. वी विल फिट दैट एक्सट्रैक्ट इनटू द बेस परसेंटेज. कैसे, कितना, वी विल डिस्कस इट टुमारो. सो द एक्सट्रैक्ट्स आर समथिंग व्हिच ट्रीट्स आवर स्किन प्रॉब्लम, व्हिच ट्रीट्स आवर हेयर प्रॉब्लम, एंड व्हिच ट्रीट्स आवर हेल्थ प्रॉब्लम. एक्सट्रैक्ट आर ऑफ टू टाइप, ऑयल सॉल्यूबल एंड अ वाटर सॉल्यूबल. ठीक है, आप दोनों में से कोई भी सर्च कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाटर सॉल्यूबल एंड ऑयल सॉल्यूबल. द लास्ट थिंग, हाउ टू डू योर होमवर्क. सो अगर आप, दो तरीका है. इफ यू वांट टू सर्च इट विद योर प्रॉब्लम नेम, यू व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन राइट इट ऑन गूगल. एक्सट्रैक्ट फॉर एंटी एजिंग, राइट, एक्सट्रैक्ट फॉर पेन, extract for skin lightening. ठीक है, in this way you can search it out. If you know the names of extract, that will be more good. अब extract कुछ भी हो सकता है.
ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट हो सकता है, मलबेरी एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कुकम्बर एक्सट्रैक्ट हो सकता है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट हो सकता है, सैफरन एक्सट्रैक्ट हो सकता है. सो एक्सट्रैक्ट आर ऑफ many numbers. So if you know the names of extracts, what you can do, saffron extract properties for skin, because what we are making is for skin. Okay, we are not making a hair care products. Otherwise what we need to search, saffron extract properties for hair or saffron extract properties for health. So we are not supposed to go for a hair or health. We will search for the name of extract, mulberry extract properties for skin. Or if you want to find it out with the problem name, like extract for anti tanning, in this way you need to search it out. अब आपको सर्च कैसे करना है हिंदी में बता देती हूँ ताकि कोई एक्सक्यूज ना मिले. सो द होमवर्क इज टू सर्च एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट के बारे में आपको जानना है, कम से कम 20 एक्सट्रैक्ट, 20 एक्सट्रैक्ट आपको कल लिख के लाने हैं. ठीक है. अब एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं? एक्सट्रैक्ट प्लांट का हार्मोन होता है. ठीक है, प्लांट से मिलता है. क्योंकि प्लांट से मिलता है तो बहुत नेचुरल होता है. एक्सट्रैक्ट को हम बेस में काउंट करते हैं. जो अभी हमने फॉर्मुलेशन देखा उसमें स्टेरिक एसिड से कुछ लेना देना नहीं है, एमल्सिफाइंग वैक्स से कुछ लेना देना नहीं है, ऑयल बटर से कुछ लेना देना नहीं है, प्रिजर्वेटिव फ्रेग्रेंस किसी से कुछ लेना देना नहीं है. एक्सट्रैक्ट को हम फिट करेंगे बेस में. ठीक है. सो बेस में कितना, कहाँ, कैसे फिट करेंगे? अब 69% लोशन में हमारा बेस निकला था, तो एक्सट्रैक्ट कितना डालेंगे उस 69% में से, वो हम कल डिस्कस करेंगे. अब एक्सट्रैक्ट ढूंढोगे कैसे, कैसे लिखोगे? एक्सट्रैक्ट हमारे स्किन के लिए भी फायदेमंद होते हैं, हेयर के लिए भी होते हैं, बॉडी के लिए भी होते हैं, हेल्थ के लिए भी होते हैं. आपको हेयर हेल्थ पे नहीं जाना है, आप 2 तरीके से सर्च कर सकते हो. अपनी प्रॉब्लम के लिए, अगर आप अपनी प्रॉब्लम जो भी है, जिस चीज के लिए भी बनाना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो एक्सट्रैक्ट फॉर एंटी टैनिंग, अगर टैनिंग के लिए चाहिए एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट फॉर एंटी एक्ने, एक्सट्रैक्ट फॉर पिगमेंटेशन, एक्सट्रैक्ट फॉर स्किन लाइटनिंग, एक्सट्रैक्ट फॉर स्किन ब्राइटनिंग, एक्सट्रैक्ट फॉर फेयरनेस, एक्सट्रैक्ट फॉर एनीथिंग. राइट. अगर आप प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं सर्च कर रहे, एक्सट्रैक्ट का नाम पता है तो एक्सट्रैक्ट का नाम डालो और उसकी प्रॉपर्टीज सर्च कर लो. मेहनत लगेगी, ऐसे ही सर्च करके गूगल पे नहीं मिल जाएगा. ठीक है. सो बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं उसको, सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, 20 एक्सट्रैक्ट लिख के लाना. इसी की तरीके से बहुत सारी वेरिएशंस आप प्रिपेयर कर पाओगे कल. सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन. वी आर सपोज टू लीव नाउ. आई होप you enjoyed. Please do revision of your recordings and everything of your notes, and please do the homework as well. Okay. Ma'am, this emulsifying wax, does it have a name or is it only emulsifying wax? Emulsifying wax is the ingredient name. The process is emulsification. The ingredients are emulsifiers. The one of the emulsifier ingredient is emulsifying wax. Okay, ma'am. Thank you. Okay. So bye-bye time, guys. Please switch on your cameras. Okay, bye-bye everyone. Have a good day and a good night ahead, and have a good dinner. जिन लोगों ने अच्छा कुछ लंच नहीं किया, so have a good dinner and bye. Thank you, ma'am. Be learn. Good. Bye-bye. Take care, everyone. Bye to all. Bye.